Good evening, beta. So I hope everyone has been completed with your units and dimensions and errors and analysis. Now let us try to do some problems related to that one. I'm not going to discuss any formulas related to that. I'm hoping that you have the basics of that one. And let us try to fastly do some standard questions based on this one. So it will be helpful. And if you are able to solve, it's fine. Otherwise, you let me know, sir, it is becoming difficult. So that I can even start with some basic concepts. Then we'll try to go for your problems. So we can even plan like that one. See, as per your depth of your understanding of your subject in the concerned chapters. Okay, sure. So the first question, dimensional formula for luminous flux. Dimensional formula for your luminous flux. You can give me the answers in your chart box, beta. First one. Anyone? Dimensional formula of your luminous flux. Can you tell me what do you mean by luminous flux, beta? Anyone? No idea? Sure. So try to remember, flux is always equals to light energy emitted by a source in a given time. That means in a simple language, you can remember it as energy divided by time. So dimension of energy is right now for me, ml square t power minus 2 divided by t. So this will go up. So it will be equal to your m into l square t power minus 3. Then, sure. Question number 2. Which of the following relation of a physical quantity has the same units as that of your ohm? You know that ohm is a unit of resistance, isn't it? Ohm is the unit of resistance. And to cross check with the given conditions right now, what are the units of the given condition? What is the unit of the ohm? Ohm is the unit for your resistance. V is equals to I into your R. So that means R is equals to V by I. V means unit is volt divided by current is nothing but ampere. Okay, beta? Sure. Now see here, what I can do is, if I multiply and divide by your ampere, and here also with your ampere, we'll be getting this one as of your volt ampere divided by ampere square. Isn't it? Now, volt ampere is the unit of, volt ampere is the unit of. Can anyone tell me what is the unit of the volt ampere? Volt ampere. You know the formula, power is equals to V into I, isn't it? So V is your volt, I is your current. So volt ampere is unit of power. Power is measured in your watt divided by ampere square. Divided by ampere square. Volt ampere is unit for the power. Power is the unit. What is the unit of the power? Watt. Watt divided by ampere square. What is also you can write in terms of joule second inverse divided by ampere square. That means I can write this one as of your joule second divided by ampere square is there right now, isn't it? So joule second divided by joule is nothing but of your joule per second ampere square. So in order to write it in terms of a square, I can write this one as s square and in terms of a square. That means that will be equal to joule second
divided by ampere second whole square. Isn't it? But check with the dimensions, but you know that h is the Planck's constant. That means E is equals to h into nu. Or h is equals to, I can write as of your E divided by nu. That is nothing but energy. 1 by nu is nothing but equal to your time period. So energy is measured in joule, time period is measured in seconds. So it is joule second. So I got it in joule second. Divided by ampere second. Ampere second means right now for me charge. Isn't it? I is equals to Q by T I can write. So Q is equals to I into T. Unit of the charge is measured. Current is measured in ampere, time is measured in second. That means Q square. Q square is nothing but E square. That means I can say that Ohm will be equal to your Planck's constant divided by E square. H by E square will be the answer. Option number C. You can cross check it once, beta. Is it? Sure. Can I have this one? Can I have this one? Flux is your energy divided by your time. And ohm is the unit of your resistance. Resistance is V is equal to IR. Simplifying that one, it is coming out for me equal to your Planck's constant divided by your E square. That is your dimensions. Okay? Sure. Can anyone try to do this second, third question better? So try to do the question number 3. A dimension formula of alpha in exponential to the power of alpha to the power of your x, where x is your distance. See, already you are completed. That is the reason I am doing it out. I am not again teaching you from everything from the basics part. Basic knowledge you should be having. This is not the class where I will be doing like your class part anyhow. So I hope you can do this one better. You know that exponentials, trigonometries have dimensionless. It means I can say that alpha into your x is your dimensionless. Dimensionless means a mass 0, L0, T0. Isn't it? So this will be equal to alpha into your x is equals to your M0, L0, T0. I need the dimension of what right now from here? Dimensional formula of your alpha. Alpha is equals to. So this value will become how much for me? M0, L0, T0 divided by x. That means this will be equal to M0, L power minus 1, T power 0. M0, L power minus 1, T power 0. Third option. Very good. Very good. Sure. I hope you are done with this one. I am removing this one. Sure. Question number 4 try kariye jaldi se. So you can try the question number 4 once faster. Take a minute of your time and try to do it out. Question number 4. An enclosed ideal gas has a pressure as a function of its volume V as P is equals to P naught minus alpha into V square, where P naught is initial pressure and alpha is constant. The physical dimensions of alpha will be equal to how much? You know that units and dimensions, you might have been studied that you can add or subtract only those physical quantities which are having the same dimensions. Isn't it? And LHS must be equal to your RHS for the given condition. That is your principle of your homogeneity. Isn't it? That means P must be equal to your P naught and P must also be equal to your alpha into your V square. So what is asking? The dimension of alpha is asking. So what you do is equate the pressure P to your alpha into your V square. Then here V is your volume beta, not velocity. Make sure of that one. So alpha value will be equal to how much beta? Alpha is equals to your pressure divided by volume square. So what is the dimension for the pressure? Pressure is equals to force by area na beta. Force is equals to ml t power minus 2 divided by area is L square. This square and this will get cancelled. So it is m L power minus 1 T power minus 2 is the dimension of pressure. So pressure is equal to m L power minus 1 T power minus 2 divided by volume. Volume is nothing but equal to your length into breadth into height into L into L into L. That is L cube of your whole square. So this value will become for me how much for me? M L power minus 1 T power minus 2 divided by L power. This total value will be equal to how much for me beta? 6.
So 6 will go up minus 6, that will be equal to your m into L power minus 7 t power minus 2. Clear? Everyone should involve in giving the answer beta. Option number D is the answer for that one. Very good. M L power minus 7 t power minus 2. What we are doing here is right now, I hope you remembered it. This P is equals to P naught. P must be equal to P naught and P must also be equal to alpha into V square. P is pressure, V is your volume. So we'll be getting the answer as this part of equation. For this one, this is your answer for. And for the second one, the answer is H by your E square. The dimensional formula for your reflex will be equal to ml square t power minus 3. Done, better? Sure. Question number 5. Can I try? Make it fast. If area A, velocity V, and density rho are taken as fundamental units, then correct dimensional formula of the force is represented by A square V into rho, AV rho square, AV square into rho, AV divided by rho. Can anyone give me the answer? Fifth one. Fifth one try करिए अभी. करना बेटा. How many of you giving the answer? Very good. C option बोल रहे हैं. और कुछ आया किसी को? C option. What is the method, better tell me? Area, velocity, and density are taken as fundamental quantities and correct dimensional formula of the force. करना क्या है? C only. Very good. C is the answer. AV square into rho. You can check with the dimensions better. That's it. He is telling that force must be directly proportional to area. I don't know, so I'm taking to the power of your A. Velocity to the power of your B. Density to the power of your C. So get the values of A, B, C, you'll get the answer for that one. Dimension of the force will be equal to how much better? That means F is equals to how much I can write? F is equals to your A to the power of your A, small a. The next one is your V, V to the power of your B. The next one is density, that is rho, rho to the power of C. Equate the dimensions. Equate the dimensions. That is, dimension of your force will be equal to how much? Dimension of the force is your M L T power minus 2. A is your area. Dimension of area will be equal to your L square. That is nothing but L square to the power of your A. And V is nothing but velocity. So it is L T power minus 1 to the power of your B. Then density is equals to mass by volume. So it is M L power minus 3 to the power of your C. So equate the powers right now. So this value will be written as m power 1, L power 1, t power minus 2. That is equals to, this value will become for me. I'll write for the first m. So it is m power of your, I can write with respect to your only C. The next one is L. L to the power of your, I'm having right now for me, this is your A. Then it is your L power of your, this is your A, this is your 2 power A. L power of your plus B and L power of your minus of your 3C. Then for T, I'm having the T where here I'm having the T only one, so it will be equal to your minus of your B. Now compare on both the sides. Comparing powers on both sides. Comparing powers on your both sides. Isn't it? That means C value will be equal to 1. Then 2A plus of your B minus 3C will be equal to 1 and minus B will be equal to minus 2. Isn't it? So right now I can write here 2 into A value, I don't know. We need to calculate the value of A plus B. B value is how much? This minus will get cancelled. So B value is equals to 2. So B value is 2 minus 3. 3 by C value is 1. That is equals to 1. So this will be equal to 2A plus 2 minus 3 is equals to 1. Minus 1, that will go on the other side, that will become for me 2. 2A will be equal to 2. So 2 will get cancelled, so A value is equals to 1. Isn't it?
That means I got the value of A, I got the value of the B, and I got the value of your C. That means force is equals to your A power A, that is nothing but 1. V to the power of B is nothing but a square. And this one is right now for me what? Density, isn't it? So this value will be equal to your into rho to the power of your 1 again. So what is the best option I am seeing right now? The third option. Done, beta? Very good. I hope you got an idea. थोड़ा lengthy है, but still you can even cross check with your what do you call that one, elimination method also. Directly आप option से भी equate करते हुए चले जा सकते हैं. Then also you can do it out with the same method basically. ठीक है ना? Am I clear with this one? Can I have this? Check कर लीजिए एक बार. One who have completed, you can see the question number 6 once. Anyone? Try कर लीजिए. Force F and density rho are related as F is equals to alpha divided by beta plus root rho. The dimensional formula of your alpha and beta respectively. चलो फास्ट कोई आंसर दे सकता है इसका? देखो, फोर्स F and density rho are related as I told you just now. डायमेंशंस में आप किसी भी चीज को ऐड कर रहे हो, मतलब दोनों के डायमेंशन सेम रहे तो ऐड कर सकते हो आप. B plus root rho मतलब B must be having the dimensions of root of your density. रो डेंसिटी होना चाहिए. ठीक है ना? इतना सारा हिंट दे दिया मैंने आपको ऑलरेडी. ट्राई करिए. आई एम रबिंग दिस वन. चलो जल्दी जल्दी करना, स्पीड बढ़ना है बेटा. दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग द क्लासेस. ऐसा नहीं है कि यू विल बी वेटिंग फॉर माय आंसर. Okay, Juveria Firdaus has given the answer. Sabah is also given the answer B. और देखो और क्या आ रहा है. Let me check. Question number 6 देखो बेटा. Even Shilpa Singh is giving the answer as B. Okay, very good. Let me see. See here, F is equals to alpha divided by beta plus of root x. Isn't it? That means if I'm simplifying this value right now here, F is equals to your, this is your alpha divided by beta plus of your root of your rho. So if I cross multiply this one, this value will become for me F into your beta plus F into your root of your rho must be equal to alpha. Isn't it? That means F into your beta will be equal to your, it must be equal to your F into your root of your rho. That must be equal to your alpha. Isn't it? So can I say that LHS must be equal to your RHS? So I can say here alpha must be equal to your F into your root of your rho. So that is equal to your F into density will be power of 1 by 2. So dimension of the force is right now for me ml t power minus 2, and density dimension will be equal to how much beta? Density is equals to mass by volume. That means m divided by L cube. That means it is m into L power minus 3. It is your m into L power minus 3 to the power of your 1 by 2. Isn't it? So this value will become for me how much beta? M power 1, L power 1, T power minus 2, M power 1 by 2, L power of your minus of your 3 by 2. That means the dimension of your alpha will be equal to your M to the power of your A plus है, ये 1 है, यहाँ पर M है, यहाँ पर M है बेटा. So it is 1 plus 1 by 2. L is right now for me 1 plus minus of your 3 by 2. Then it is your T power of your minus 2. तो t पावर माइनस 2 कहीं ऑप्शन में है क्या? देखो बेटा, ए में है, बी में है, सी में नहीं है, एंड डी इज आल्सो इज नॉट गिवन. सो लेट मी चेक विद दिस वन. दिया हो गया m to the power of 1 plus 1 by 2 will be equal to 3 by 2. This will be equal to your L. 1 it is plus minus minus 1 minus 3 by 2. So 1 minus 3 by 2 will be equal to minus 1 by 2 and t power of your minus 2. So dimension of alpha will be equal to 3 by 2 L power minus 1 by 2 T power minus 2. तो बी ऑप्शन एक ही दिख रहा है मेरे को, और एक करने की भी जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. ये आप डायरेक्टली बीटा का भी डायमेंशन निकाल सकते थे बेसिकली. ठीक है ना? Isn't it? या आप ऐसा भी टाइम सेव कर सकते थे सर. डायरेक्टली आप ऐसा भी कर सकते थे ना, क्या बोले तो यू कैन डायरेक्टली चेक विद योर बीटा, बिकॉज बीटा प्लस ऑफ योर रूट रो ऐड किए हुए हैं. तो आई टोल्ड यू वी कैन ऐड ओनली द डायमेंशंस व्हिच आर हैविंग द सेम डायमेंशन, यानी बीटा मस्ट बी हैविंग रो टू द पावर ऑफ 1 by 2. Isn't it?
दैट मीन्स डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू अभी लिखा मैंने m इंटू एल पावर -3 टू द पावर ऑफ 1/2, तो ये बन जाएगा m पावर 1/2 एंड दिस विल बिकम फॉर मी l पावर ऑफ -3/2। ऐसा भी लिखते तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है बेसिकली। मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराने के लिए किया, इसलिए यहाँ पर अपने को आंसर आते हैं। आई होप यू गॉट एन आइडिया। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए बेटा जब तक। इन वैन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ द स्टेट p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस p इज इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है। यूनिट ऑफ a इंटू b इज न्यूटन मीटर टू द पावर ऑफ योर 7 दे रखा है। रीजन दे रखा है, we can add, subtract, multiply, divide the physical quantity having the same dimensions. Very good, very important. अभी हम लोग ने लिखा था बेसिकली, अभी समझ जाता। We can add, we can subtract the quantities which are having the same dimensions and also the same condition. तो सिर्फ add and subtract तक ही हो सकता है। यहाँ पर multiply, divide the physical quantity having the same dimensions बोला है। See, any two physical quantities can be multiplied or divided irrespective of the dimensions बेटा, isn't it? उसको सेम होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐड और सबट्रैक्ट के लिए दोनों सेम डायमेंशंस होनी चाहिए। बट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन we can, irrespective of the dimensions, we can divide them and we can multiply them, so it is not depending on that. So reason to 110% false होगा, isn't it? And van der Waals equation में p plus a by v square into v minus p is equal to a constant है, and unit of a भी पूछ रहा है, that we need to cross check कि उसका यूनिट वही आ रहा है नहीं आ रहा है। चेक कर लो एक बार। सर assertion is true, reason is false. सबक इस बार वेरी गुड बेटा। और कोई आंसर दे सक रहा है क्या? Have you got an idea? Just now I told you बेटा, we can add, we can subtract, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को और डिवाइड करने के लिए डायमेंशंस की जरूरत नहीं है। Irrespective of the dimensions, you can multiply and divide बेटा। I hope you are clear with this one. मेरा assertion is true। और कोई assertion true हो रहा है? सानिया, assertion is true। Yes sir, A is true, R is false. A is true. Very good. चलिए आगे आना समझ में। ये डायमेंशन आया ना सभी को, m to the power of 7 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने p प्लस a बाई वी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है? प्रेशर का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन के बराबर होना, यानी a इज इक्वल्स टू p इंटू वी स्क्वायर हो गया। a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा राइट नाउ फॉर मी? p into your v square हो गया, and v is nothing but how much for me? इसी तरह से v minus b subtract हो रहा है, मतलब v must be equal to p. v is nothing but how much for me? L cube, that is nothing but b, ठीक है ना? तो this value will become how much for me? L cube है, तो a into b करना है, a into b कर लो। a की वैल्यू है p into v square into your, ये हो गया मेरे पास b की वैल्यू क्या है मेरे पास? L cube। So this is your pressure. Pressure is right now for me P into your V square. L cube is nothing but equal to V. So ये हो गया P into your V cube. Pressure मतलब क्या? Force by your area. Area का dimension हो जाएगा L square into your V cube. पता है ना? V cube मतलब L में लिख सकता हूँ ना मैं? Divided by L square into your L cube whole cube हो जाएगा. So that will be equal to your F into your L power 7. यानी force is measured in Newton and distance is measured in meters, तो m to the power of 7 हो गया, तो this one is correct। ठीक है, am I clear with this one? And reason is wrong, so what is the best option I can write for this one? B is your answer for this one beta. B is your answer. A is true but reason is false. Question number 8. I hope you can do this question beta. If K represents the kinetic energy, V velocity and T is the time are taken as the fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension in terms of K, V and T will be equal to how much? Can anyone try beta? Question number 8 try कर लीजिए एक बार जल्दी से। If K is representing me the kinetic energy, V velocity, T time are fundamental quantities and dimensional formula for surface tension, and the surface tension must be equal to, surface tension का कोई symbolic representation नहीं है, that must be equal to your right now kinetic energy to the power of A लिख सकते हैं, then velocity to the power of B लिख सकते हैं, then time to the power of C लिख सकते हैं। अब इसको डायमेंशन लिख लीजिए। सरफेस टेंशन मतलब क्या बेटा? फोर्स बाय योर लेंथ। फोर्स का डायमेंशन हो गया कितना? ml t पावर -2 डिवाइडेड बाय l, l gets cancelled, so it is ml0 t पावर -2 is the dimension of surface tension। सी बता रहे कोई, के वी टू द पावर ऑफ -2 टी पावर -2, क्या ये आ गया? सभी को देख लीजिए एक बार जल्दी से। एनीवन? चलो लिखते हैं, ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन लिख लो बेटा। सो इट इज योर m पावर 1 l पावर 0 t पावर -2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन, एनर्जी ml स्क्वायर t पावर -2 टू द पावर ऑफ योर ये
वेलोसिटी एल टी पावर -1 टू द पावर ऑफ योर v टाइम का t पावर c। ठीक है ना? हमें क्लियर? वही तरह करना है, m टू द पावर में लिख लीजिए बेसिकली एंड ट्राई टू डू द रिलेशन। ये कितना हो जाएगा, m टू द पावर ऑफ योर, ये हो गया एक ही हो, देन राइट नाउ l टू द पावर ऑफ 2 ये है, l टू द पावर ऑफ c है, देन t है, t टू द पावर ऑफ -2 ये है, t टू द पावर ऑफ -b है, प्लस c है। तो यहाँ पर हो गया m पावर 1, l पावर 0, t पावर -2। तो ये का डायमेंशन हो गया 1, 2a प्लस b विल बी इक्वल टू योर 0 एंड -2a माइनस b प्लस c विल बी इक्वल टू -2। उसमें से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर। ए की तो वैल्यू आ गई ना बेटा, सो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी बनी है मेरे पास, बी की वैल्यू बन गई -2। बी की वैल्यू बन गई मेरे पास -2। ये टर्म कहाँ जाना है यार? हाँ, तो बी की वैल्यू देख लीजिए बेटा, इसमें कितनी आ रही है? सी दिख रहा है। आ गया सभी को? इसमें बी की वैल्यू कितनी आ रही है? बी की वैल्यू विल बी कमिंग आउट फ्रॉम योर माइनस ऑफ योर, तो ए की भी वैल्यू आ गई मेरे पास, इसमें से भी आ गया, अब ये वाला देख लीजिए, इसमें से मैं टेक दिस वन, तो ये हो गया मेरे पास -2 इंटू 1, दिस विल बी माइनस, बी की वैल्यू -2 प्लस सी इज इक्वल्स टू, ए कितने के बराबर है था बेटा? दिस विल बी इक्वल टू -2 के बराबर था। ठीक है ना? तो अभी यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लीजिए, सो इट इज -2 माइनस माइनस +2 प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। सी की वैल्यू बन गई कितनी, -2। ये मेरी तो ऐसे चले गया बेसिकली, यानी दिस विल बी इक्वल टू k टू द पावर ऑफ 1, v टू द पावर ऑफ -2, t टू द पावर ऑफ -2। कौन सा ऑप्शन मैचअप हो रहा है देख लीजिए बेटा, k v टू द पावर ऑफ -2, t टू द पावर ऑफ -2, c इज द बेस्ट ऑप्शन राइट। आ गया? समझ लिया? शेयर हो रहा है ना बेटा? हाँ चलिए, मिनट देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिए। If P and Q are two physical quantities having the different dimension formulae, then which of the following can represent a new physical quantity? Very good question. पहले क्वेश्चन को समझो अच्छी तरह से। शिल्पा सिंह is also giving the C। 8th वन का है ना आंसर वो तो। 9th वन का आंसर क्या आ रहा है देखिए, 9th वन का भी C आ रहा है क्या? अच्छा, 9th वन का भी C आ रहा है।
यूवेरिया एसआर एसआर ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। सी का डायमेंशन देखो क्या बोल रहा है। P and Q are two physical quantities having the different dimensional formula. Then which of the following can represent a new physical quantity? See, as per the principle of homogeneity of dimensions, only those terms can be added or subtracted which have the same dimensional formula. But we can multiply and divide the physical quantity which have different dimensional formula. मैंने इससे पहले एक बनाया था। అంటే न्यू फिजिकल क्वांटिटी भी जो भी देगा ना, that will be नॉन जीरो डायमेंशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, P and Q have two different dimensional formulas, so both P quantities cannot be added or not be like say P plus Q है, वो तो नहीं होगा right now for me, but dividing P by Q we can have a new physical quantity, that is possible. And we know that exponential and trigonometric angles are dimensionless, so given terms like P by Q must have the dimensionless quantity, which is not possible as P and Q have different dimensional formula बोला है problem में already आपको। तो only the best option I can write for this one is right now for me what beta P by Q, very good। 10th one देख लीजिए बेटा। A massive star of mass m is in the uniform circular orbit around a supermassive black hole of mass mb. Initially, the radius and angular frequency of the orbits are Kepler and omega respectively. According to the Einstein's theory of general relativity, the space around the two objects is distorted and gravitational waves are radiated. The power radiated through gravitational waves by this star is given by P is equal to K, C power x, G power y, M power 2, R power 4, omega power 6. Where c is the speed of light. Using the dimensional analysis, the sum values of your x and y will be equal to how much? बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है उसने। सेम करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं, जो भी डिपेंडेंस है ना वो पूरा अपने को पावर से रेडिएट करना है। डायमेंशन ऑफ द पावर जो होगा ना वो पावर लिख के C का डायमेंशन, G का डायमेंशन, R का डायमेंशन और ओमेगा का डायमेंशन से इक्वेट करके put to the power of लिख के to get the values of your A, B, C, whatever he is writing, then accordingly you can get the dimensions of that one। ठीक है ना, कर लोगे करो, एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बात समझ में आई ना, क्या बोलना चाह रहा था? ठीक है, मैं एक बार रफली आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं है बेटा, उसने क्या बोला, पावर जो रहेगा ना बेसिकली, पहले पावर का डायमेंशन बताइए। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम ना, तो दैट विल बी m l स्क्वायर t पावर -2 होगा, देन टाइम होगा। तो डायमेंशन ऑफ द पावर हो गया मेरे पास m l स्क्वायर t पावर -3। ठीक है ना, तो मैं ये कर लिया, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो रफली, p इज इक्वल्स टू k, सम कांस्टेंट k है ना, देन c पावर ऑफ योर x है, g पावर ऑफ योर y है, m पावर ऑफ योर 2 है, r पावर ऑफ योर 4 है, ओमेगा टू द पावर ऑफ 6 है। तो k तो सम कांस्टेंट है राइट नाउ फॉर मी, isn't it? तो he's asking x plus y का डायमेंशन कितना हो जाएगा, यानी x और y की वैल्यू निकालना है। पहले पावर का डायमेंशन लिख लीजिए आप। सो पावर का डायमेंशन इज राइट नाउ फॉर मी m पावर 1, l पावर 2, t पावर -3, दैट मस्ट बी इक्वल टू योर k जो कांस्टेंट है बेसिकली, इनटू c टू द पावर ऑफ योर x है, उसके बाद g टू द पावर ऑफ y है, उसके बाद m टू द पावर ऑफ 2 है, देन ये r है, r टू द पावर ऑफ 4 है, देन ओमेगा है, ओमेगा टू द पावर ऑफ 6 है। आ गया, तो अब डायमेंशन लिख लीजिए बस। दिस इज योर m पावर 1, दिस इज योर l स्क्वायर t पावर -3, that is equals to your k तो वैसे भी कांस्टेंट है राइट नाउ, सो इफ आई एम राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ योर k, इट इज योर m0 l0 t0 के नीचे आएगा, सो इसका भी कुछ भी रिलेशन नहीं है। देन स्पीड यानी l t पावर -1 टू द पावर ऑफ योर x आएगा, देन g इज राइट नाउ फॉर मी व्हाट, क्या बोला उसने, g क्या बोला है, g इज रिप्रेजेंटिंग मी व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैसिव स्टार यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर, m will be the dimensional gravitational constant ही होगा। So this will be equal to your m power of your -1, l power 3, t power of your -2 to the power of 5। डायमेंशन ऑफ y g निकालने आता है ना बेटा, f is equals to g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर में से g का डायमेंशन निकालना, g is equals to f into r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगा। देन बाकी के तो टर्म्स आपको ऑलरेडी पूरे दे चुका है बेसिकली, तो सिर्फ मैं x और y के टर्म्स लिख रहा हूँ। सो दिस नेक्स्ट वन इज राइट नाउ फॉर मी m into your 2, the next one is l to the power of your 4, रेडियस मतलब दैट वन, एंड ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड है, t पावर -1 टू द पावर ऑफ 6। ठीक है ना, आप पूरे m टर्म्स एक जगह लिख लीजिए, so it is your m to the power of,
दिस विल बी, कहाँ है यहाँ पर, तो 0 है, यहाँ पर माइनस वाई है, और कहाँ है यहाँ पर 2 है, तो इट विल बी 2 माइनस ऑफ योर वाई, उसके बाद एल है, एल टू द पावर ऑफ, यहाँ 0 है, एल टू द पावर ऑफ एक्स है, so I'm having your x plus I'm having 3y plus of your 4. Then in terms of time period, if I'm writing minus of your x minus of 2y minus of 6. Now compare the powers on both the sides. M L square t power minus 3 आ जाएगा आंसर. अब यहाँ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे. कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लीजिए जल्दी से. Can anyone give me the answer for that one? अब खाली पावर्स कंपेयर करना है बेटा. ये 2 माइनस y है, 4 नहीं होता फिर आप ये सुनिए. So comparing the powers on both the sides of that equations, you can get the answer for that one. Power mass में क्या है बेटा, 2 minus y is equals to 1. उसके बाद x plus 3y plus 4 is equals to 2. Then उसके बाद minus x minus 2y minus 6 is equals to minus 3. ठीक है ना. तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. पहले वाले में से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. y की वैल्यू लेके जाके इस सेकंड वाले में डाल दीजिए. So it is your x plus 3 into 1 plus 4 is equals to 2. तो x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, -5. So I got the value of x, I got the value of your y. So x plus y आप अभी ऐड कर सकते हो शायद. तो सम कितना हो जाएगा बेटा, x plus y की वैल्यू बताइए. x plus of your y, x की वैल्यू कितनी आई, -5 plus 1. So that will be equal to -4. -4 will be the answer. Very good. करने वाला क्वेश्चन है, बट बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में उतना ज्यादा समझना वो इम्पोर्टेंट है बेसिकली. लेकिन पहले ही 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो यू विल बी गेटिंग एडिक्टेड टू डू सच टाइप ऑफ योर प्रॉब्लम्स. नहीं आने की बात नहीं है. दैट्स हैविंग दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है ना. तो वैसे भी ये रिकॉर्डेड वर्जन है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. तो आपको अगर सोल्यूशन भी देख लेना फिर से एक बार, तो वहां पर भी आप क्रॉस चेक करके फिर एक बार देख ले सकते हैं. I don't have space here to keep this all solutions, so I'm rubbing them. ये हफ्ता पूरा अपना यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर्स ही है बेटा. एक बार ये चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग एक एग्जाम रख लेंगे इस पर. देन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट वीक का सिलेबस. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिए कोई भी. क्वेश्चन नंबर 11. The quantity x is given by epsilon naught into L into delta V by delta T, where epsilon naught is permittivity of free space, L is the length, delta V is potential difference, delta T is the time interval. The dimensional formula of your x. I hope you can do that one. So I'm not giving that one. की है एक बार चेक कर लीजिए. Question number 12. The pair of physical quantity that have the same, that have different dimensional formula. Reynolds number, अभी तो Reynolds number deleted है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए. Coefficient of friction, latent heat of gravitation, ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. आई थिंक ये वाला भी कर सकते हैं आप आराम से. ये पूरा सेकेंड ईयर के टॉपिक्स रिलेटेड है, ये भी कर सकते हैं आप लोग. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा एक बार. कैन एनीवन सी द क्वेश्चन नंबर 15? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी इज ट्रू? लास्ट ईयर दिया था क्वेश्चन. Last year there was a question based on this one. Which of the following statements regarding the precision and accuracy is true? See, a measurement is said to be more accurate when it has lesser value of relative error. However, a measure is said to be more precise. यानी precise मतलब क्या? When it has very lesser value of your absolute error. That means measured by an instrument, it has to be have a very smallest least count. So from both the statements, we can conclude that most of the precise measurements may be most accurate, but not necessarily, and vice versa, it should not be a true basically. So what is the best option I can write for that one? The most precise measurement will necessarily be the most accurate. Most precise measurement may be most accurate. A most accurate measurement will be necessarily be most precise. Most precise measurement will be less accurate. 110% chances of doing the mistake in this problem. अगर ये कल के दिन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए, तो I can say that 98% of बच्चे इसका damn sure गलत आंसर लिख के आएंगे, unless and until you are having clear cut idea about your dimensional formula. What do you call the definitions of your accuracy? पहले मैं क्या बोल रहा था, एक्यूरेसी मतलब क्या? अगर मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर एक्यूरेट मतलब इट शुड हैव वेरी लेसर वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर बेटा.
ठीक है ना. Or if I am saying precise, that means you should have a lesser value of an absolute error. यानी measured value of an instrument, whatever you're doing, you should have the very smaller least count. So from both the statements, we can conclude that most precise measurements may be most accurate, but not necessarily. It's not true right now. So what is the best option I can write? The most precise measurement may be most accurate will be the best option. What I feel that right now for B. Very good. 16th one. I hope you can do this question better. If a physical quantity x depends on two other quantities a and b such that x is equal to a power m divided by b power n, then relative error in the measurement of x is given as delta x by x is equal to m plus or minus delta a by a plus n plus or minus delta b by e. The expression is true when m and n both are positive, delta a and delta b are very small compared to the relative respective quantities, delta a and delta b both have the positive values. There is no condition at a given expression. Again, very good question. Chances are very huge the students do the mistake even in this question. सर 15th वन का देखो बेटा डेफिनेशन पे डिपेंड करता है. आप लोग एक बार प्रिसीशन का एक्यूरेशन का डेफिनेशन करना है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेट मेजरमेंट? मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट मतलब वो मेजरमेंट जिसके अंदर इट हैज वेरी लेसर रिलेटिव एरर, यानी रिलेटिव एरर जो रहेगा ना बहुत ज्यादा कम रहेगा. whereas मतलब प्रिसीशन मतलब it has very lesser value of absolute error. Absolute के अंदर जो भी value error रहता है ना that should be very very lesser. यानी measured by any instruments like a least count वगैरह जो रहता है ना उसमें बहुत least value of your error होना चाहिए. ठीक है? That should be the answer for that. Question number 16 का आंसर कोई दे सकता है क्या? Question number 16 का आंसर. Very good question, but again chances are there very huge. यानी 15 and 16 are really very damn good questions I can say. अब जरा इस पे कंसंट्रेशन करिए ऐसे वाले क्वेश्चंस पे, that will be really helpful for you. फिर फिजिकल क्वांटिटी, हाँ बेटा देखो एरर में जब हम लोग लिखते हैं ना वेरी स्मॉल एरर के लिए तो नेगेटिव टर्म नहीं आता. सो बोथ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव क्वांटिटी. दैट इज द रीजन हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं बेसिकली. सो बेस्ट ऑप्शन इज राइट नाउ फॉर मी और बी. ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आई होप यू कैन डू. क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए बेटा एक बार. A student performs an experiment in lab in order to measure a physical quantity and takes 100 observations. He repeats the same experiment and takes 400 observations. By doing so, the possible error remains same, is doubled, is half, is reduced to 1/4. Again, very huge chances that student do the mistakes in this question. Very huge chances that again the student do the mistake in question number 18. The student performs an instrument right now. A student performs an experiment in a lab in order to measure a physical quantity and takes 100 observations. They repeat the same experiments and take 400 observations. By doing so, the possible error might be कितना होगा? क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना एरर होने के भी चांसेस उतने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. यानी आई कैन से दैट एरर जो होता है बेसिकली, एरर जो होता है ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. Number of observations. So number of observations are made how many times? Beta 4 times. And a possibly reduce error, possible error is reduced to how much for me? 1/4 times लिख सकता हूँ मैं क्योंकि 100 है ना तो 4 times increase हुआ तो it should be reduced by 1/4. Very good question. D. Very good. And question number 19 I hope you can do. Question number 20 भी एक बार try करिए बेटा सभी लोग. Question number 20. See how many of you can give the answer. The number of significant digits in 20.000 and 6.23 into 10 power 1 are respectively equal to how much? Directly बोलना कल ही बताया था मैंने आप लोग. Question number 20 का answer. See, all the non-zero digits are significant and trailing zeros, isn't it? That means 0 to the right of the last non-zero digit in any number of decimal points are significant. यानी 20.000 have a number of significant figures. Point decimal के बाद जितने भी रहेंगे that are significant for me. तो इसको देखने के साथ ही आप लोग बोल देना चाहिए था आंसर बेसिकली. हाउ मेनी ऑफ इट? डी ऑप्शन को जा रहे हैं सभी लोग. डी ऑप्शन कैसा होगा बेटा? सभी लोग रॉन्ग आंसर दे रहे हैं. बाप रे. शिल्पा हैज गिवन करेक्ट आंसर. वेरी गुड बेटा.
बी साइन अप गुड। सी कैसा होगा, 2 कैसा होगा बेटा? देखो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस रहेंगे that will be your significant. All non-zero digits are significant and trailing zeros यानी zero to the right of the last non-zero digit in any number with the decimal point should always be significant. तो इसके अंदर 5 significant रहेंगे, वही मिस्टेक किया था कल, मैंने बताया भी था। और देखो एक्सपोनेंशियल जो रहता है ना, बेसिकली द नंबर इज एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, एक्सपोनेंशियल टर्म हो, इट विल नॉट अफेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स लाइक 6.23 into 10 power 1। जो पावर रहेगा ना, इट इज नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट नाउ, यानी 6.23 में कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, सो इट विल बी 3, सो बी विल बी द आंसर फॉर दैट। ठीक है, सो द फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बीन गिवन बाय शिल्पा सिंह। उसके बाद सभी लोग नहीं कर लेते चले गए। 5-3 सर बोल रहे हैं। 5 कैसा होगा, 3 कैसा होगा? 5-3 मतलब अच्छा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट लिख रहा है, मैंने ऑप्शंस में पूछ रहा था इसके। ओके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे वाले क्वेश्चन आए तो आप लोग फंसते रहोगे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इस पे वर्क करवा रहा हूँ। देख लीजिए एक बार आप लोग, सी हाउ मेनी चांसेस आर दैट यू कैन डू दैट करेक्ट क्वेश्चन। Question number 21. Study the following statement. Statement 1. The length of the state highway when expressed in kilometer is 65.2 kilometer, where it has a 3 significant figures. Statement 2. Same length when expressed in meters, 65200 meters, have 5 significant figures. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the options given for me. अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो, बेसिकली नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। Statement 1 is correct and statement 2 will be equal to right now. क्या हो जाएगा बताइए? The number of significant figures of a measurement cannot be increased by changing the unit. ये बात याद रख लीजिए। The given measurement of state highway is in kilometers and meters. So the number of significant figure will remain for me the same. So statement 1 and statement 2 both are correct. क्या both correct है क्या? नहीं, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। फर्स्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट ही फिगर है, पॉइंट नहीं है ना, तो ये काउंट में नहीं आएगा आपको बेसिकली। ओके वेरी गुड, सो लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग द स्टेटमेंट 2, yeah, statement 2 is false and statement 1 is correct and statement 2 is B. Very good, done। चलिए, तो रफली अब बाकी क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 कर सकते हैं क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 22। The initial and final temperature of water as recorded by student are 30.4 plus or minus 0.2 degrees Celsius and 51.5 plus or minus 0.4 degrees Celsius. The rise in the temperature will be equal to how much? Question number 22. Try करिए। Question number 22. T1 कितना दे रखा है? T1 is equals to 30.4 plus or minus of 0.2 degree Celsius. और फाइनल टेम्परेचर कितना दे रखा है? टी फाइनल इज इक्वल्स टू 51.5 प्लस और माइनस ऑफ 0.4 डिग्री सेल्सियस। और क्या पूछ रहा है? राइज, यानी डेल्टा टी विल बी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर दो, दैट इज पहले 51.5 माइनस 30.4 कर दो, दैट विल बी 21.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? तो 21 पॉइंट में तो आ गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये एंड बी में आंसर होना चाहिए। डेल्टा टी का एरर देखो, डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ डेल्टा टी इनिशियल प्लस डेल्टा फाइनल इनिशियल। एरर कभी भी ऐड होगा, प्लस और माइनस, इसमें कितना है? 0.2 है प्लस 0.4 है, तो नहीं, ये हो जाएगा प्लस और माइनस ऑफ 0.6 पर डिग्री सेल्सियस। किसी को आया ऑप्शन? आफिया खान, वेरी गुड, बी आंसर दे रहे हैं भाई, वेरी गुड। चलो या बी विल बी द आंसर फॉर दैट। सो राइज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू दैट मच। इसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिए। 24 भी एक बार ट्राई कर लीजिए। 25 my screw gauge or almost all what you call that vernier calipers पे एक separate असाइनमेंट ही लूंगा, से थोड़ा कॉन्सेप्ट करवा लेके then we'll try to do it all। ठीक है ना? कल भी मेरे को हॉलिडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली करना भी ना कभी एक पॉइंट पे कोई और चैप्टर भी मैं अपलोड करूंगा। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू इट आउट विद दैट वन।
तो आज थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया। आप लोग अगर जिनका क्या बोलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन अभी शेकी लग रहा है, ये वीक पूरा टाइम है अपने के यूनिट्स एंड डायमेंशन में। सी दिस चैप्टर्स व्हाट यू आर डूइंग रिवीजन विद मी इज at the risk of your own, not at the risk of your college exams or something like that. मेरी हार्डली एक आधे घंटे 1 घंटे की क्लास रहेगी डेली, 10-15 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आप रोज एक आधा घंटा घंटा वही यूनिट्स एंड डायमेंशन के एक बार रिवीजन कर लीजिए, थोड़े पीवाईक्यूज कर लीजिए। तो ये हफ्ते में वैसा टारगेट बना के रखिए कि मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस एरर्स को इन डेप्थ में कंप्लीट करूंगा एंड आई विल मेक माय कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ठीक है ना? चलिए, सो प्लीज सेंड की फॉर थर्मोडायनेमिक्स असाइनमेंट्स प्रोवाइड करिए ना, सॉल्विंग इजी हो जाता। मैं देखता हूँ बेटा, इफ इट इज पॉसिबल आई विल ट्राई टू सेंड दैट वन। थर्मोडायनेमिक्स का मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है ना? कल भी आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स का एक क्लास होगी बेटा। बाकी के जो असाइनमेंट्स मैंने दिए ना उसको भी मैं कल करूंगा आफ्टरनून में, कभी ना कभी कोई नाइट टाइम में निकाल के आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स का और एक या दो असाइनमेंट्स में खत्म करूंगा। ठीक है? चलिए, टेक केयर बेटा, बाय।